So today we are discussing about sewage treatment, summary session of wastewater engineering. सीवेज ट्रीटमेंट का बारे में बात कर रहे हैं हम. चलो सीवेज ट्रीटमेंट. सो सीवेज ट्रीटमेंट का बारे में so we have four methods of treatment. Preliminary, primary, secondary, tertiary. Sewage treatment classified into four: preliminary, primary, secondary and tertiary. Preliminary treatment: screening, grit chamber, detritus tank, skimming tank. Screening, grit chamber, detritus tank, skimming tank. Primary treatment: sedimentation. Primary treatment is सिर्फ sedimentation. What is the difference between sedimentation in water and sewage? ये बात बताओ. सिवेज का सेडिमेंटेशन का डिफरेंस, वाटर का सेडिमेंटेशन का डिफरेंस क्या चीज है, क्या है बताओ. सिवेज का सेडिमेंटेशन में डिटेंशन टाइम लगेगा 1 to 2 hours. ओवरफ्लो रेट 40 to 60 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर. दिस इज डिफरेंट. सिवेज का प्राइमरी सेडिमेंटेशन, दिस विल बी नेम्ड एज अ टाइप 3 सेटलिंग. वो बोलेगा टाइप 3 वाला बोलेगा टाइप 3. गुड मॉर्निंग नवीन जगदीशन. प्राइमरी सेडिमेंटेशन इन वाटर 4 to 8 hours लगेगा ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी सेडिमेंटेशन. सिवेज में 1 to 2 hour. ओवरफ्लो रेट बहुत कम था ना, 12 to 18, बट हियर 40 to 60 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर. Again, secondary we classify into two types. Secondary treatment. Secondary treatment we classify into three types: physico-chemical methods, biological methods. Physico-chemical methods and biological. This is very important. All treatments are depending upon biological. We'll talk a lot regarding biological. Physico-chemical, when you can do? Physico-chemical you can do when BOD to COD ratio less than 0.6. Biological you can do when BOD to COD ratio greater than or equal to 0.6. Biological treatment will do BOD to COD ratio less than or equal to 0.6 physico-chemical, greater than or equal to 0.6 biological. So now we are going to talk about preliminary treatment.
प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का बारे में बात करेगा पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग. बताओ स्क्रीनिंग का बारे में. स्क्रीनिंग कैरिड आउट फॉर फ्लोटिंग मैटर ना. स्क्रीनिंग कैरिड आउट फॉर फ्लोटिंग मैटर. Floating matter like plant leaves, vegetable matter, plant leaves, vegetable matter, polythene bags, paper material, old cloth material. Floating matter चलने के लिए screening, separate करने के लिए screening करेगा. So this can separate particles of diameter greater than particles of diameter greater than 3 mm. Screening में any particle with diameter greater than 3 mm वो separate हो जाएगा. Detention time for screening 2 to 3 minutes हो जाएगा क्या? Detention time for screening क्या है? Screening का detention time बताओ. Screening diameter particle greater than 3 mm and its detention time is said to be 2 to 3 minutes. Grit chamber. Grit chamber is a primary sedimentation type 1 settling. Grit chamber is a type 1 settling. Primary sedimentation type 1 settling in grit chamber going on. In grit chamber it is going on for separation of sand, silt and grit particle. For separation of sand, silt and grit particle, and you are having the separation of particles of diameter between 1 to 3 mm, or you can say diameter greater than 1 mm. Diameter greater than 1 mm. समझ आ रहा है अभी? Type 1 sedimentation in STP sewage treatment plant is grit chamber. Type 1 sedimentation sewage treatment plant is grit chamber. And type 3 is primary sedimentation. Diameter of particle is 1 to 3 mm or greater than 1 mm. ये खत्म हो जाएगा जल्दी खत्म हो जाएगा. Detention time is 1 to 2 minutes. Detention time is 1 to 2 minutes. What is its important thing? Its important thing is uniform flow velocity. Uniform flow velocity. Uniform flow velocity of 0.3 meter per second. 0.3 meter per second. Always a constant flow velocity. Never it will change. It is a uniform flow velocity of 0.3 meter per second. Detention time 1 to 2 minutes. समझ आ रहा है? Grit chamber is a uniformly flowing water. It can settle particles of diameter greater than 1 mm. चलो समझ आ रहा है अभी? चलो detritus tank also same. Diameter between 0.1 to 1 mm, or you can say diameter greater than 0.1 mm. Diameter between 0.1 to 1 mm or diameter greater than 0.1 mm. It is also used to settle sand and silt, sand and grit. Sand and grit particles.
उनका चीज क्या है, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड ग्रिट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड ग्रिट भी हो रहा है उनका चीज भी. डिटेंशन टाइम again 2 to 3 minutes. Detention time only you need from the preliminary treatment. What kind of impurities are getting removed? What is the detention time? बस preliminary treatment से आपको जानना पड़ेगा, बस क्या जानना पड़ेगा, what is the impurity type to be removed and what is detention time. अब skimming tank ले लो बाबू, skimming tank. Skimming tank is used to separate out. Oil and grease na. Skimming tank is used to separate out oil and grease. Detention time of 4 to 5 minutes. Oil and grease separation, detention time of 4 to 5 minutes. बस वो भी होना चाहिए हमको, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट खत्म. एंड एज ऑफ नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ग्रिड चैम्बर. कभी भी वो ग्रिड चैम्बर का बारे में भी दे रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. सो दिस इज ऑल्सो गिवन फॉर सेफ्टी, बट मोस्टली व्हेन यू गो फॉर स्टेट एग्जाम, एसएससी और ईएससी एग्जामिनेशन, गेट में अभी तक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से 0 क्वेश्चन, गेट में 0 क्वेश्चन. स्टेट एग्जाम एई एडब्ल्यू एसएससी में हमको ग्रिड चैम्बर से आ रहे, डेट्रियस टैंक से आ रहे, बस. Biological treatment. Biological treatment we can classify into anaerobic biological treatment, aerobic biological treatment. Biological treatment we can classify into 2 types: anaerobic biological treatment, aerobic biological treatment. anaerobic biological treatment का और दूसरा नाम क्या है, रिडक्शन. aerobic biological treatment का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन. 2 चीज है ना, एनारोबिक में रिडक्शन हो रहा है, एरोबिक में ऑक्सीडेशन हो रहा है. एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में रिडक्शन, एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑक्सीडेशन शुरू कर रहे हैं. देन सो एनारोबिक में व्हाट आर द ट्रीटमेंट मेथड्स. एनारोबिक में स्लज, digestion and drying, septic tank. Septic tank. Anaerobic में sludge, digestion and drying and septic tank. एरोबिक में क्या आ रहा है, आपको मालूम था ना, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉइंट. बस ये भी लिखो, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉइंट. हमको क्या जरूरत होना चाहिए इधर, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, end products of aerobic treatment and anaerobic treatment. End products of aerobic biological treatment, anaerobic biological treatment. क्या हो रहे end products, aerobic biological treatment and anaerobic. anaerobic में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
H2S। एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, H2S आ रहे। कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 30%, मीथेन 70%, H2S 0 to 5%। एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स 25 to 30% कार्बन डाइऑक्साइड, 70% मीथेन, 0 to 5% H2S। हाँ, एरोबिक में क्या चल रहा है? एरोबिक में क्या चल रहा है? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2S। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2S। end products for aerobic biological treatment, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2S। चलो चलो, हो गया काम। अरे पहले क्या कर रहे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस ना। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और वी कॉल इट एज बायोडिग्रेडेशन। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट or else we call it as biodegradation। Decomposition, putrefaction, all are same। Degradation, decomposition, putrefaction, all are same, please understand। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और बायोडिग्रेडेशन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाबू? ऑर्गेनिक मैटर in sewage, organic matter in sewage taken as food। ये फूड जैसा ले रहे ना, ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज टेकन एज फूड। कौन ले रहे हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज टेकिंग ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज एज फूड। कार्बन डाइऑक्साइड, inorganic solids and other gases। Carbon dioxide, inorganic solids and other gases, along with energy for bacteria, along with energy for bacteria। This is biodegradation। Carbon dioxide plus inorganic solids along with energy for bacteria। Organic matter in sewage break down into, so carbon is taken out as carbon dioxide, carbon is taken out as carbon dioxide, then remaining solids will be taken as inorganic solids। एनर्जी आ रहे बाहर से, एनर्जी आ रहे। चलो, so this is biological treatment के बारे में। एरोबिक होगा तो एरोबिक बैक्टीरिया ले लो, ऑक्सीजन दे दो। एनारोबिक होगा तो एनारोबिक बैक्टीरिया दे दो, बस। दैट इज डिफरेंट। एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, ये ले लो, एरोबिक बैक्टीरिया ले लो, ऑक्सीजन ऐड करो, ऑर्गेनिक मैटर प्लस ऑक्सीजन ऐड करो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया मिलेगा। इफ यू नीड एनारोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया ऐड करो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन मिलेगा, बस। दैट इज डिफरेंस। समझ आ रही? डिफरेंस मालूम था ना आपको? आपको मालूम था ना डिफरेंस? चलो, so we are moving towards activated sludge process, ASP, the most important topic from sewage treatment। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सीवेज ट्रीटमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक।
सिवेज ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, and mostly we have question in GATE exam as well as ESC exam and state exams everywhere. Very important. Activated sludge process. So क्या हो रहा है activated sludge process से? Activated sludge process is a aerobic treatment process for sewage. Aerobic treatment process for sewage, activated sludge process. So there are two tanks here. One is aeration tank, we call this as aeration tank. Second one is SST, secondary sedimentation tank. So you are loading raw sludge, settled raw sludge from primary sedimentation tank. प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से सेटल्ड स्लज होगा ना, सेटल्ड स्लज, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या चीज है सेटल हो गया, ये सेटल्ड स्लज, दैट इज लोडेड ओवर हियर, दैट इज गेटिंग लोडेड ओवर हियर. प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से सेटल्ड स्लज आ रहे, वो लोड हो गया. उनका कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे, QI influent discharge, YI influent BOD, XI influent solids concentration. 3. Influent flow rate, influent discharge, influent solids concentration. We are making a continuous mixing, a continuous stirring mixing going on. A continuous stirring mixing चलेगा, वो चलने के बाद एयर अंदर आएगा, एयर दिएगा ऑक्सीजन. वी आर गिविंग ऑक्सीजन इनटू इट. एरोबिक बैक्टीरिया आल्सो गिवन, एरोबिक बैक्टीरिया गिवन, फूड आल्सो गिवन, फूड फॉर ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, फूड फॉर ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. समझ आ रहे क्या क्या दे रहे हैं हम. एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का टैंक का अंदर क्या क्या दे रहे हैं हम. सेटल्ड स्लज फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बाय कंटिन्यूअस मिक्सिंग डिवाइसेस, एरेटिंग डिवाइसेस, एरेशन ऑक्सीजन, सस्पेंडेड कल्चर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. कैसा दे रहे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया इन एएसपी, एरोबिक बैक्टीरिया इन एएसपी कैसा दे रहे, suspended culture, semi solid culture, suspended culture of bacteria, semi solid culture of bacteria. What is suspended culture? Organism move towards food. What is suspended culture मालूम था ना आपको. Organism chase food. Suspended culture बोल रहे हो, सस्पेंडेड कल्चर बोल रहे हो. ऑर्गेनिज्म चेज फूड, एरोबिक बैक्टीरिया इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, सस्पेंडेड कल्चर, ऑर्गेनिज्म चेज फूड. ऑर्गेनिज्म विल चेज द फूड. सो बैक्टीरिया इज मूविंग टुवर्ड्स वेर एवर फूड इज अवेलेबल. फूड कहां है वो ढूंढ रहा है. इट इज सर्चिंग वेर द फूड इज देयर. बैक्टीरिया विल गो, organism will go and chase the food. And aeration चल रहे, इधर 4 to 8 hours चल रहे. Aeration is going on for a duration of 4 to 8 hours.
सफिशिएंट एरेशन, मिक्सिंग हो जाएगा, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा। प्रॉपर मिक्स होने के बाद 4 to 8 आवर्स खत्म होने के बाद टोटल स्लज इज ट्रांसफर टू एसएसटी। टोटल स्लज इज ट्रांसफर टू एसएसटी। नाउ बैक्टीरिया स्टार्ट्स टेकिंग फूड। सो एरेशन टैंक में सिर्फ एरेशन चल रहे, एरेशन टैंक में सिर्फ एरेशन चल रहे, बट हियर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में दो चीज चल रहे हमको, डिकम्पोजिशन एंड सेटलिंग। बोथ टू एक्टिविटीज, बोथ एक्टिविटीज गो ऑन। यस केशव गारू, टीएफ ट्रिकलिंग फिल्टर में फूड चेंज ऑर्गेनिज्म मीन्स ट्रिकलिंग फिल्टर में बैक्टीरिया लगेगा ना, वो आपका जैसा लेजी ऑर्गेनिज्म था, आपका जैसा लेजी ऑर्गेनिज्म था। ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं चलेगा, वो लेजी सिर्फ कभी भी अटैच हो गया, आप कभी भी बेड में था ना, आपको क्या चाहिए वो आपका बेड में आएगा। सेम लाइक दैट बैक्टीरिया आल्सो लेजी, ट्रिकलिंग फिल्टर में लेजी ऑर्गेनिज्म था, so that food go towards organism in trickling filter, but here it is a most active, highly active, energetic bacteria. So activated sludge process में क्या हो रहा है, activated sludge process में highly active, energetic bacteria. So bacteria will go to food, bacteria will go to food. So decomposition and settling चल रहा है, decomposition and settling, two activities going on, decomposition and settling going on. सो डिकम्पोजिशन खत्म होने के बाद वॉट एवर सॉलिड्स कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक, ये पूरा सॉलिड्स इधर सेटल हो जाएगा। वॉट एवर सॉलिड्स कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक, वो पूरा का पूरा नीचे बॉटम में चल जाएगा, सेटल हो जाएगा नीचे बॉटम में, सेटल्ड स्लज। एंड दैट सेटल्ड स्लज सॉलिड्स, दिस इज कॉल्ड digested settled sludge, digested settled sludge। वो कहां चल रहे, digested settled sludge कहां चल रहे, बताओ बाबू। digested settled sludge sludge digestion के पास चल रहे, यस डी, स्लज डाइजेशन के पास चल रहे, एस डी। वॉट एवर सेटल्ड सॉलिड्स विच आर एट द बॉटम, ऊपर बॉटम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एसएसटी, डाइजेस्टेड स्लज सॉलिड्स, that is going to sludge digestion, that is going to sludge digestion। चलो, और ऊपर पानी रहेगा ना, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट रहेगा ना, एफ्लुएंट, वो एफ्लुएंट का सॉलिड्स कहां चल रहे, पहले ये लिखो, पहले ये लिखो, डाइजेस्टेड स्लज सॉलिड्स का कैरेक्टर्स QW XW, वेस्ट स्लज फ्लो रेट, वेस्ट स्लज सॉलिड्स कॉन्सेंट्रेशन, QW waste sludge flow rate, XW waste sludge solids concentration. So it sludge digester में चल रहे ना, sludge digester में चल रहे ना, वो क्या है, waste sludge, that is waste sludge। sludge digester में क्या चल रहे, उनका नाम digested waste था। digest करने के बाद बैक्टीरिया वो खा लिया, वो खा लिया बैक्टीरिया, खाने के बाद और बाहर निकल दिया ना, खाने के बाद बाहर निकल दिया ना, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टेड वेस्ट। समझ आ रहे, दिस इज ए बैक्टीरियल सेल, दिस इज ए बैक्टीरियल सेल। आप वो बैक्टीरियल सेल को सॉलिड्स दे रहे, इतना बड़ा वाला लार्ज कॉम्प्लेक्स वाला सॉलिड्स फूड दे रहे आप, वो फूड एंटर किया, बैक्टीरिया का अंदर एंटर किया फूड, बैक्टीरिया का अंदर एंटर किया, वो फूड है ना, फूड बैक्टीरिया का अंदर एंटर किया, डाइजेशन हो रहा है। कहां डाइजेशन हो रहा है, बैक्टीरिया का फेट में, बैक्टीरियल डाइजेस्टिव एंजाइम्स में। समझ आ रहा है,
बैक्टीरिया का फेट में डाइजेस्ट हो रहे हैं, उनका अंदर बैक्टीरियल डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट हो रहे हैं, और एल्स दे आर रिलीजिंग स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल छोटा वाला आदमी स्मॉल पार्टिकल बाहर आ रहे. दिस इज कॉल्ड वेस्ट स्लज. This is called waste sludge. So that waste sludge coming after digestion of bacteria. Waste sludge coming after digestion of bacteria. वो बाहर निकल रहे. And that is settled. That is given to sludge digestion. That is settled and that is given to sludge digestion. समझ आ रहे हैं ना आपको? Now, ऊपर लिक्विड में डिजॉल्व्ड सॉलिड्स होना ना, डिजॉल्व्ड सॉलिड से टीडीएस मिलेगा. दैट इज गोइंग टू ट्रिकलिंग फिल्टर. दैट इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रिकलिंग फिल्टर. ऊपर एफ्लुएंट मिलेगा ना, एफ्लुएंट. दैट एफ्लुएंट सॉलिड्स कहां चल रहे? एफ्लुएंट सॉलिड्स QE YE XE. effluent flow rate QE, effluent BOD YE, effluent organic solids or effluent solids concentration XE, QE YE XE. ट्रिकलिंग फिल्टर में चल रहे. QE YE XE कहां चल रहे? ट्रिकलिंग फिल्टर्स में चल रहे, ट्रिकलिंग फिल्टर में चल रहे. अनडाइजेस्टेड सॉलिड्स मिलेगा हमको बाबू. अनडाइजेस्टेड सॉलिड्स not at all used by bacteria, not at all utilized by bacteria, bada wala. Still even after certain time of decomposition, unutilized solids. Unutilized solids. Unutilized solids कहां चल रहे? Going back कहां? एरेशन टैंक से. रिसाइकलिंग चाहिए और एक बार एरेशन चाहिए उनको, और एक बार एरेशन चाहिए उनको. रिसाइकलिंग चल रही. रिसाइकिल्ड स्लज उनको और एक बार चाहिए. रिसाइकिल्ड स्लज वो कहां चल रहे? QR and XR. recycled sludge flow rate, recycled sludge flow rate, recycled solids concentration. वो निकल रहे. कहां निकल रहे? रिवर्स में चल रहे. रिवर्स, गोइंग टू एरेशन चैम्बर अगेन, गोइंग टू एरेशन चैम्बर अगेन. सो दिस इज ए कंटिन्यूअसली अकरिंग प्रोसेस. कभी भी न्यू सॉलिड्स एंटर हो रहे, एरेट हो जाएगा, देन it is going to secondary sedimentation tank, decomposition chalega, decomposed will be settled down, and that settled down going to sludge digestion. TDS मिलेगा ना, total dissolved solids effluent में. effluent का solids का नाम क्या है? TDS. effluent में क्या है? TDS. वो बाहर चल रहे, trickling filter में चल रहे. this is undigested ना, undecomposed, undigested solids, not utilized by bacteria, return back. Undecomposed solids not utilized by bacteria, return back. That is going to recycle. So क्या हो रहा है activated sludge process में? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से रॉ स्लज जा रहे. रॉ स्लज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से रॉ स्लज जा रहे. नो, टीडीएस आर डिजॉल्व्ड ना, ये पानी में डिजॉल्व हो गया. टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स आर डिजॉल्व्ड, पानी में डिजॉल्व हो गया, पानी का अंदर चले गए, वो सेटल नहीं हो जाएगा. And this raw sludge is given to aeration chamber. This raw sludge is given to aeration chamber. प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से रॉ स्लज जा रहे,
वो एरेशन चैम्बर से दे रहे। एरेशन चैम्बर में क्या है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हो गया, सो दैट रॉ स्लज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड, रॉ स्लज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड स्लज, रॉ स्लज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड स्लज। समझ आ रहा है? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से रॉ स्लज आ गया, रॉ स्लज अंडर एरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोसेस एक्टिवेटेड स्लज हो जाएगा। दिस एक्टिवेटेड स्लज इज लोडेड टू सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, एसएसटी। एसएसटी में क्या चल रहे, पहले डिकम्पोजिशन चल रहे, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या मिल रहा है आपको, डाइजेस्टेड वेस्ट स्लज, डाइजेस्टेड वेस्ट स्लज मिलेगा डिकम्पोजिशन खत्म होने के बाद। यस आर नो? पीएसटी से रॉ स्लज, रॉ टू एक्टिवेटेड बाय एरेशन प्रोसेस, देन एक्टिवेटेड दे रहे, एक्टिवेटेड कहां दे रहे, एक्टिवेटेड दे रहे एसएसटी को, देन एसएसटी में पहले डिकम्पोजिशन हो रहे। क्यों कर रहे डिकम्पोजिशन, हु इज डूइंग डिकम्पोजिशन, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया इज डूइंग डिकम्पोजिशन, एरोबिक बैक्टीरिया इज डूइंग डिकम्पोजिशन। देन उनके अलावा क्या आ रहा है, डाइजेस्टेड स्लज आ रहा है, डाइजेस्टेड स्लज कैन अंडरगो सेटलिंग ना, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टेड हो गया, ये बाहर चल जाएगा, सेटिल करेगा, स्लज डाइजेस्टर में चल जाएगा, सेटिल हो जाएगा, स्लज डाइजेस्टर में चल जाएगा ना। सो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से रॉ स्लज, देन एरेशन एक्टिवेटेड स्लज, देन डिकम्पोजिशन डाइजेस्टेड, दैट इज अंडरगोइंग सेटलिंग। समझ आ रहे, हो गया काम। दिस इज द प्रोसेस फ्लो चार्ट, process flow chart related to activated sludge, ASP activated sludge process का flow chart, activated sludge process का flow chart बना रहे हम। एरेशन टैंक रिलेटेड डेटा, एरेशन टैंक रिलेटेड डेटा, एरेशन टैंक रिलेटेड डेटा में क्या चल रहे हम, फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन आपको, एरेशन टैंक रिलेटेड डेटा में क्या चल रहे हैं, Unknown caller. वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ टैंक, volume or capacity of tank V, discharge in liter per day into influent BOD in mg per liter, discharge in liter per day into effluent BOD in milligram per liter, मिलीग्राम से केजी कन्वर्शन के लिए 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, और एल्स वी टेक BOD लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट और BOD लोडिंग रेट और U, करेक्ट। total BOD by U, total BOD by U, this is in kg per day, ये आ रहा है kg per day per meter cube,
You are taking organic loading rate in kg per day per meter cube. Capacity, volume or capacity of aeration tank. So we can take this as total BOD by U. Total BOD by U. U is OLR, organic loading rate. So you are getting capacity, volume in units of meter cube. Volume or capacity in units of meter cube. Next one. Mass of solids loaded. Mass of solids loaded. M. पूरा टैंक का कैपेसिटी V, विच इज टेकन इन लीटर. सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन XI, विच इज टेकन इन मिलीग्राम पर लीटर, इंटू 10 power minus 6 into 10 power minus 6 to convert milligram to kg. अब क्या आ रहे मास? kg आ रहे. मास इन kg, वॉल्यूम इन लीटर, XI मिलीग्राम पर लीटर, 10 power minus 6 मिलीग्राम टू kg. सो मास कैसा आ रहे? मास kg में आ रहे. मास ऑफ सॉलिड्स लोडेड kg. समझ आ रहा है अभी? क्लियर ना? दैट इज मास ऑफ सॉलिड्स लोडेड. अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो. फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, very important in any exam. Very important in any exam. F by M ratio, food to microorganism ratio, F by M. So what is F by M? Amount of solids utilized, consumed, amount of biomass loaded, amount of solids utilized by amount of solids loaded, biomass consumed by solids loaded, biomass consumed by solids loaded, amount of solids utilized by amount of solids loaded, F by M. उनका बारे में क्या लिखेगा? Q into YI by V into XI. Q into YI by V into XI. एक्यूरेट में कैसा लिखेगा? Q into YI minus YE by V into XI. वो वाला एक्यूरेट वाला, वो वाला एक्यूरेट वाला. Q into YI minus YE by V into XI. Q into YI minus YE by V into XI, वो वाला accurate food to microorganism ratio. That will be taken as more and more accurate value, food to microorganism ratio. चलो food to microorganism ratio, amount of solids utilized by amount of solids loaded. So हमको एग्जाम में क्या चाहिए बाबू? हमको एग्जाम में बस ये फार्मूला होना चाहिए बस. दिस इज इंपॉर्टेंट. उनका यूनिट क्या है? फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो का यूनिट क्या है? उनका यूनिट पर डे लेना पड़ेगा. पर डे, पर डे, डे इनवर्स. उनका यूनिट पर डे, डे इनवर्स लेना पड़ेगा. हम क्यू लीटर पर डे, वॉल्यूम लीटर, YI mg पर लीटर, XI mg पर लीटर. क्यू लीटर पर डे, YI mg पर लीटर, वॉल्यूम लीटर, XI mg पर लीटर. mg पर लीटर कैंसिल हो गया. क्यू लीटर पर डे, वॉल्यूम लीटर, ओनली पर डे मिलेगा हमको.
चलो next one. Aeration period, dt, volume by discharge, 4 to 8 hours. Aeration period dt, volume by discharge 4 to 8 hours. Next, SVI, sludge volume index, ml per gram, sludge volume index ml per gram. यस केशव गारू, ऊपर वाला फार्मूला हमको 100% एफिशिएंसी होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ स्लज सेटल्ड, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का बारे में बात कर रहे हैं हम. वॉल्यूम ऑफ स्लज सेटल्ड ml per liter, MLSS concentration, gram per liter. Volume of sludge settled ml per liter, MLSS concentration gram per liter. So लीटर कट हो जाएगा, ml पर ग्राम में मिलेगा हमको. SVI sludge volume index, SVI sludge volume इंडेक्स. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू 50 to 150 ml पर ग्राम. इंडियन स्लज का स्लज वैल्यू क्या है? इंडियन स्लज का एसवीआई वैल्यू क्या है? 350 to 500. इंडियन स्लज का 350 to 500. जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू इज 50 to 150. इंडियन वेस्ट से क्या आ रहा है? इंडियन वेस्ट से क्या आ रहा है? 350 to 500. जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू 50 to 150. 50 to 150. चलो SDI sludge density index, sludge density index 100 upon SVI, 100 upon SVI. XR return sludgy solids concentration, return sludgy solids concentration. 10 power 6 by SVI, SVI ml पर ग्राम में ले लो, XR आपको mg पर लीटर में आ रहे. Returned sludgy solids concentration XR 10 power 6 by SVI, 10 power 6 by SVI. वो ml पर ग्राम में ले लो SVI, आपको XR mg पर लीटर में आ रहे. Recycling ratio, recycling ratio QR by Q, X upon XR minus X. Recycling ratio QR by Q, X upon XR minus X. And recycling ratio is accepted between 0.4 to 0.5. XR is accepted up to 12,000 mg per liter.
12,000 mg per liter. XR वैल्यू 9,000 से 12,000 हो जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12,000. मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12,000. रिसाइकलिंग रेशियो 0.4 to 0.5 हो जाएगा. मैक्सिमम 50% रिसाइकिल. उनका ज्यादा रिसाइकिल मत करो, उनका ज्यादा रिसाइकिल मत करो. The very important are sludge is mean cell residence time. Sludge is mean cell residence time. Sludge is or mean cell residence time. वो बोल रहे थीटा सी और एमसीआरटी. स्लज एज लिखेगा थीटा सी, मीन सेल रेसिडेंस टाइम लिखेगा एमसीआरटी. सो वी आर नॉट एट ऑल एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. क्यों? अरे बाबा ये समरी सेशन था. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला एंड गिविंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बस. बिकॉज इट इज ए समरी सेशन, नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. समझ आ रहा है आपको? थीटा सी और एमसीआरटी, मीन सेल रेसिडेंस टाइम. थीटा सी और एमसीआरटी. mass of solids loaded upon mass of solids wasted per day. Mass of solids loaded upon mass of solids wasted per day. Mass of solids loaded upon mass of solids wasted per day. Theta C MCRT. So उनका बारे में क्या लिखेगा? Mass of solids loaded upon mass of solids wasted per day. V into XI, QE into XE, QW into XW. हो गया ना? V into XI upon QE into XE plus QW into XW. V into XI, volume into solids of influent mass, total mass. Mass of solids wasted per one day. Per one day, solids wasted towards system of trickling filter. Solids wasted towards system of trickling filter. Solids wasted towards system of sludge digester. Solids wasted towards system of sludge digester. V into XI upon QE into XE plus QW into XW. Bas. So this is enough from activated sludge process.